या अली मदद, Alwaaz, Abu Ali, wise number 64. On behalf of us all, I would like to welcome Alwaaz. We don't have any fixed topic for the seminar, but we would like it to be as informal as possible, and let's try to have as lively a discussion as possible. And with that, I would like Alwaaz to start. Now we must start with the Ginan. भली करावो शारा मदद मोमिनो अज सेमिनार जड़ी है जो कि मेन रीजन बनाइन जो तो यंगस्टर जे साथे मिलन जो हो पण यंगस्टर्स ओछा आइन अने नॉन यंगस्टर्स थी जाए हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमायो मुझो मोमन कोई डी बुढ़ो न थो थे। मजहब अड़ी चीज है जिंदारो के इंसान के मजहब विषय इल्म रखियो खपे, जानियो खपे। असी शाह जो दीदार कुलय गिनो था, कुलय नियाज वक्ते असी फरमान पीर शाह बोलू था, कुलय असी जमीन मथे हाथ रखी ने तरे वक्त अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमो पढ़ू था। दुआ जे अंदर कुलाई असी राइट शोल्डर ने लेफ्ट शोल्डर के टच करूं था। ही मड़े चीजों दरेक इस्माइली के जाननी खपे। पण इस्माइली मजहब जे अंदर इल्म जो जेटलो दर्जो रखन में आयो है असी एतरी दरकार नथा करूं अने इन जे लाए घणी वक्ते पंहिंजे मन जे अंदर फरमानो अने मजहब जी बाबतों में शंका उत्पन्न थिए थी। जड़ी रीते आंखे हेवर थियो से कि मौला जो फरमान है दरेक इस्माइली के पोते जे धर्म को जानियो खपे, सिखियो खपे। रसूलुल्लाह जी हदीस है कि इल्म सिखण माटे आंखे चीन वियो खपे तो ए विनो। अने ये फरमान है कि दरेक मुसलमान मर्द ने मुसलमान औरत मथे इल्म जो सीखनो फर्ज है। फर्ज ड्यूटी में अची वने, ऑब्लिगेशन अची वने। आवा के हिकिड़ी मिसाल दियां। असांजी प्रथा है कि एंटर थियूं जे मतखाने में तो हिकिड़ी सेकेंड हुडा दरवाजे ते असीं उभा रहियूं था। हिकिड़ी सेकेंड उभो रहियो खपे, ॿ पग जोड़ीने थोड़ो मथो नमन करी असीं चयो था हाय जिंदा। बाजू में कोई माण्हू वेठो है या उभो है तो ही जवाब दिए कायम पाया। सैकड़ों वर्षों थी पंहिंजी प्रथा हली अचे थी। इनजो मतलब तो ही आहे हिकिड़ो कि असीं डिक्लेयर करूं था। ऐं मूंखे पोते खे चवां थो
कि हाज़िर इमाम हिदा जिंदा है अने जे वेठो है हू चए कि मौला हिदा हाज़िर मौजूद वेठो है। ये पंहिंजे ईमान जी डिक्लेरेशन है, ये पंहिंजे ईमान जी अनाउंसमेंट है। अने इनसे असांजो जे ईमान है इनजे संबंधी यादी अचे थी कि आऊं इस्माइली जमात खाने में आयो आहियां अने जमात खानो हाज़िर इमाम जो घर आहे। हाज़िर इमाम हिदा हाज़िर नाज़िर वेठा आहिनि अने आऊं हिदा इबादत बंदगी करण लाइ आयो आहियां। इंसान के जॾहिं ही समझ में अवेयरनेस हुए थी तो इनजे इबादत करण जे तरीक़े में मज़हब जी जेतिरी रीत रस्म क्रिया कर्म आहिनि इनमें इनके स्वाद अचे थो, मज़ा अचे थो, इनजो मन हल्को थी वञे थो, इनजे अंदर नूर पैदा थिए थो, इनजो ईमान मज़बूत थिए थो, यकीन ने श्रद्धा वधे थी। इन हिसाबे इनजे थिंकिंग में फेरफार पई वञे थो। अॻे अचो ही तो दीनदारो आऊं छा करणो से कि आई मूंखे सवाल पूछो पर मूंखे प्योरली धार्मिक सवाल खपन। एवं सवाल जी कोई जरूर ना है कि काउंसिल करो करे थी ने एसोसिएशन करो करे थी। मुझो काम ही है कि आऊं मजहब सिखाया अने बाकी काउंसिल ने एसोसिएशन जा ही मुखी कवड़िया ने जो चेयरमैन आई इन्हीं के आई पकड़ो मुझे सामने आई धार्मिक सवाल खणी अचो वियो की ना आई कोई क्वेश्चन। सवाल से शुरू करा छेले आज मामी दाइवा तो इंजे फरमान में अकड़ो पॉइंट इम्पोर्टेंट हुआ कि आवते 5 वर्ष में टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन थींदी जिनमें माथे तैयार थी जो है मुझे जानना है कि पंहिंजे कोई टोपरे में लखेलो है कि टेक्निकल रिवोल्यूशन पूरो हो सके क्योंकि अज जी साइंस प्रमाणे पाके लगे तो कि जे पण हो सके पाके आइडिया के कंप्यूटर के फील्ड में हो के स्पेस के फील्ड में हो पर कोई चीज पंहिंजे टोपरे में के जो पाके ख्याल ना आछे अने जे हो सके। मुझे ख्याल में इमाम सुल्तान अहमद शाह के जमाने से साइंस सीखो अने साइंस में अग्या वधो एड़ा फरमानो इमाम के आइन पाके पण साथे साथे पाके ही बन फरमान थियो है कि आई आज मजहब मथे मजबूत रहो। फ्यूचर टेक्नोलॉजी जे माटे पंहिंजे गिनानू जे अंदर घणी अड़ी रेफरेंसिस आहिनि। दाखला तरीके स्पेस जी ॻाल्हियूं पंहिंजे गिनानू में आहिनि अने से अहिड़ी रीति आहे कि जॾहिं मौला दैत कालिंगा जे साथे लड़दा तो स्पेस में से माण्हू अचदा मदद अचदी अने आर्मामेंट्स अचना एटम बम थीनो एटम बम जो यूज थीनो ये मड़े चीजों 800-900 वर्ष पहला पंहिंजे पीरो जे गिनानो जे अंदर आई अने आऊं नथो धारा कि दुनिया जे अंदर कोई बे लिटरेचर में हिन संबंधी कोई एतरी झूनी भविष्यवाणी कोई बे ठिकाने हुए। हज़रत इमाम जो ही फरमान के फ्यूचर जी टेक्नोलॉजी जे माटे आई तैयार रहो मतलब जो ही है कि जे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी थीनी ये एतरी बड़ी एडवांस थीनी कि हेवर कदाच असी इनके कॉम्प्रिहेंड नहीं करी सकूं पर एड़ो न थिए कि आंजो ईमान ही टेक्नोलॉजी के कारण खराब थई वने आंजो ईमान मजबूत रहे। दारुसलाम में साहब आया सिल्वर जुबली टाणे तो मां फरमायो कि घना साइंटिस्टों कोई नवी शोध खोड़ करन था तो इन जो हेड स्वोलन थई वने तो एटले मथो वडो थई वने तो ही समझन था कि ही असाजी अकल ने होशियारी जे हिसाबे आए अने खुदा कोई चीज ना है पर इन्हीं के समझो खपे कि जिन ब्रेन में से ही टेक्नोलॉजी डिस्कवर थई या इन्वेंशन थई है ये ब्रेन बनाने वालों के એટલે ये खुदा बनाई है कोई साइंटिस्ट नहीं बनाई। तो इमाम जो चवणो ही है कि जीअं जीअं जी टेक्नोलॉजी वधनी
ती माण्हू बहु वधारे मेटीरियलिस्टिक थी वञनि, इन करता पाण इस्माइली जी आहियूं, पंहिंजे धर्म मथे पाण खे चुस्त रहियो खपे। ऐं अहिड़ो ख़्याल करां, कोई नवाई जी ॻाल्हि न आहे कि इंसान पोते पर्सनली ई उॾंदो। एवर तो असीं एरोप्लेन जे अंदर वेही न उॾूं था, पर मुंहिंजो अहिड़ो ख़्याल आहे कि 5 वर्षे के 20 वर्षे जहिड़ी रीते हिकिड़ो डाइवर समुंदर जे अंदर वञे, 2 सिलेंडर पुठियां रखे हुए अने पग जे अंदर हू फ्लैपर्स पहिरे, अहिड़ी जी रीते पुठ जे मथे 2 सिलेंडर हुआ, नंढो इंजन हुए अने इन जे मथे शाफ्ट में प्रोपेलर हुए जिन जे साथे पंखा हुन, कि जहिड़ी रीते हेलीकॉप्टर जे मथे पंखा आहिनि अने इन जे हथ में एक्सेलरेटर हुए अने डायरेक्टर हुए। अहिड़ी रीते आऊं गप न मारा तो आगे चाह कि आऊं खरेखर हिकिड़े वक़्त मुंहिंजे सोने में अहिड़ी चीज नारियो आहियां। अने जॾहिं आऊं वीचार करां तो मूंखे हिन में पॉसिबिलिटी लगे थी अहिड़ी टेक्नोलॉजी फ्यूचर जे अंदर अचे, कोई नवाई जी ॻाल्हि न। ईअं थिए कदाच कि हेॾा वेठो आहियां अने मूंखे भूख लगी आहे अने खाली इच्छा करण से मुंहिंजे साम्हूं हिकिड़ो थाड़ो अची वञे। साइंस विचार करी रही है कि जेटली चीजों आहिनि, दाखला तरीके ही टेप रिकॉर्डर पियो है, ही टेप रिकॉर्डर डिजोल्व थी वञे अने उन जी ताने न्यूयॉर्क जे अंदर ये पाछो उभो थिए, हेॾा ही अदृश्य थी वञे। अहिड़ी जादूगरी जी कला साइंस कढंदी। अहिड़ी चीजों नारी ने पंहिंजो ईमान ख़राब न थिए। हज़रत इमाम जो फरमान है कि आई इनमें होशियार रोजा क्या जो ईमान सारो रहे। हाणे ॿई साइड चा कंप्यूटर साइंस आहे, ही साइंस हेवर बहु वधी न आहे, मूंखे लगे तो हार्डली 10% સુધી आहे। 90% कंप्यूटर साइंस अॻियां वधनी। इन कंप्यूटर जे लीधे घणी जूनी पुरानी चीजों अॻियां जे ज़माने में जे ठहियलियूं हुयूं, ही पाण रिसीव करदासीं अने अॻियां वधीने साइंटिस्टों जो चवणो ही आहे कि कोई पण माण्हू जे बोले तो इनजा बोल शब्दों स्पेस में वाइब्रेशन तरीके रोन था। एवर आऊं बोली रहियो आहियां, मुंहिंजी जे साउंड वेव्स आहिनि ये एटमॉस्फेयर जे अंदर फिरी आंजे कन सुधी अचे थी, पनी मटी न थी वञे। मुंहिंजी साउंड वेव्स आऊं जे टॉक करी रहियो आहियां ये हेॾा रोंदी अने कदाच बारी बार न खुलन तो बार सुधी पन रे, पन ये हमेशा माटे रहे। ही लोगों जो चवणो ही है कि जो ही गाल सच्ची है तो 2000 वर्ष पहला जीसस जी की बोली भी आई, ये हेवर एटमॉस्फेयर में आए, इनके पास कैच कर जाए। अने 4000 वर्ष पहला मोजिस की बोली भी आई तो ही पन आए ने 1400 वर्ष पहला मोहम्मद बोली भी आई ई पन आए। अगर जो अहिड़ी टेक्नोलॉजी कामयाब थी वञे तो दुनिया जे अंदर घना झगड़ा मटी वञनि, कारण के मोजिस करो सचो चयो है ये पाण खे ख़बर पए ने जीसस करो सचो चयो है ये पाण खे ख़बर पए। अहिड़ी टेक्नोलॉजी अल्लाह करे जल्दी अचे, मुंहिंजी हयाती में तो बहुत राजी थी। तो पंहिंजो मतलब इमाम जो ही हुओ कि अयां जो ईमान सलामत रखिजा, भले दुनिया जे अंदर केतली पण उथल पाथल थिए, भले दुनिया जे अंदर केतली पण टेक्नोलॉजी अॻियां वधी वञे, भले साइंस नवी नवी डिस्कवरीज करे, इनसे पण कोई पंहिंजे ईमान में खलल पैदा न थिए, बंदगी इबादत चालू रहे। नारो पीरो जेकी गिनानों में फरमाया आहिनि, इन्हीं लोगों जे वटे कोई दुनिया जो ज़ाहिरी रिकॉर्ड न हुओ, पर ही लोगों इबादत बंदगी में रूहानी शक्ति से हजारों वर्ष पहला, सैकड़ों वर्ष पहला ये लोगों
પોતે જે મનની અંદર નારી શક્યા એટલે જ્ઞાન પાંજી સામે मौजूद आहिनि अने इन जे अंदर जे साइंस जी तरक्की थींदी ये ज्ञानों में आए बिल्कुल आए I got a question which I suppose has to do with a lot of other youth here in Canada. Youths are not known here. What advice would you give us on how to adjust to the society here? Because the society here has its good and bad points, its freedom, its conventions and everything. What kind of advice would you give us on adjustment? Well, my advice is mix with them and derive good things out of this society, in which this society has lot of good things also. It is like a platter before you in a restaurant. You order for a tea steak. Well, T-bone steak has come. You eat the meat and leave the bones in the plate. Similarly, derive good things, adopt good things, take away good things out of it, and leave the bad things. Now, what is good and what is bad, Hazar Imam's Farman will show you. Our religion will tell you what is good and what is bad. For instance, drug addiction or drug taking or drug eating, it is not good according to our religion. So we shouldn't indulge in that. Telling a lie is also a bad thing. Stealing, pickpocketing, shoplifting, all such bad habits which is prevalent in this society is bad. I heard some time back one of the ministers of this province, he shoplifted and got into jail. See? So this is the society in which you are living. We shouldn't indulge in bad things, and bad things are indicated by our religion. So if you study your faith, you will come to know how to live with them. I don't mind talking and mixing and eating with any person in this Canada or anywhere in the world. Even if there is a kafir, an atheist, he can sit with me and eat it with me in one table, but his ideas may not be able to convince me, and my idea might not be able to convince him. But I must follow my path. Carlyle says, my religion is my religion, and other man's religion is other man's religion. That is what Rasulullah was told by Allah. O Prophet, tell these mushrikeens, your religion with you, my religion with me. This is the thing. Your religion with you, others' religion with them. I heard that Islam is the final religion, or the Quran is the final book in like a final chapter in a book. Is that true? Is Christianity, and then was Christianity modified into Islam and things like that? Or is it just separate religions and everyone was expected to convert? Or when human race started on this earth, God also sent his prophet. Normally, without going into minute details, we believe that Adam was the first prophet of God. Thousands of years ago, Prophet Adam brought the message from Allah. That was the first message of Islam. After Adam, Noah came. Noah was also prophet of God. Whatever he brought, it was also part of Islam.
Similarly, Abraham, Moses, David, Jesus all brought some messages from God, and they were Muslim or Islamic prophets. Whatever they brought, it was a message of Islam. All prophets brought Islam, although in their time, because of the difference of language, the name of religion was not Islam, but all prophets taught Islam. Muhammad brought the message which was absolutely Muslim message, Islam, and it was the last installment. That's what the Quran says. And Quran is the last book which includes Torah, Zabur, and Injil. Muhammad was the last prophet, and his message included the messages of all the prophets. We Muslims believe that Abraham, Moses, Jesus, David, all the biblical prophets and all those prophets which have not been mentioned, they were totaling 124,000. They were all Muslims. Every prophet brought Islam, no matter whatever the time and language. But Islam is religion of God. Whatever we were told by any prophet, it was a part of Islam. So Islam is the last installment presently brought by Muhammad, and Quran is definitely the last book. Pantanita, Adam was the first prophet, fellow Nabiwa. And in a simplistic way, he be showing that Adam fellow insan. So you can what a preach for no. અને ગાલી है कि जिन आदम की असी फर्स्ट इंसान छो था ये डिफरेंट हुआ नबी आदम से. नबी आदम ये फर्स्ट इंसान ना हुआ. फर्स्ट इंसान जिनके असी आदम अबुल बशर छो था ये एडी प्रिमिटिव स्टेज से हुआ कि इनके उन वक्त नबूवत न मिली हुई. पण दर ज़माने जे अंदर जॾहिं इंसान दुनिया में न हुआ तो पण खुदा जी गाइडेंस ने नूर हुओ, मौजूद हुओ. अमुक टाइम में नबूवत ज़ाहिर थींदी हुई, अमुक टाइम में नबूवत ज़ाहिर न थींदी हुई. मिसाल हज़रत जीसस ईसा जे अने रसूल मोहम्मद जे विच में आसरे 600 वर्ष जो डिफरेंस है. अलबत् 600 वर्ष के दरमियान कोई जाहिर प्रॉफिट नहीं थिया, पण खुदा ताला जो नूर इन दुनिया के अंदर मौजूद हुओ एटलो ज के इन जी अनाउंसमेंट न थई. अहिड़ी ज रीते नबी आदम जे फर्स्ट नबी हुआ, इन पहला आदम रेस दुनिया में हुई. कारण के जो आदम रेस दुनिया में न हुए तो ही नबी किन माटे थी. पोते माटे नबी जी जरूरत ना, नबी तो पॉपुलेशन माटे खपे. એટલે જે આદમ जिनके असी फर्स्ट इंसान छो था कि नबी ना हुआ. नबी तो घणो पछी आए यानी घणा आदम थी आए. मौला अली के अगले वक्त पुछण में आयो, या मौला आदम पहला कूड़ो हुओ तो फरमायो आदम हुओ. थोड़ी बार इन मारू की समझ में न पई तो ये या मौला हुन आदम पहला कूड़ो हुओ. मौला फरमायो हुन पहला आदम हुओ. ए इंसान सब उनके चोन था तू मुके 3000 वक्त पूछने कि आदम पहला कूड़ो हुओ तो चोंदो सी आदम. समझन वाली चीज है पर मुश्किल है कि 3000 आदम थिया. जो मतलब ही थियो कि ही पृथ्वी मथे घणी सिविलाइजेशन्स ठहियूं आहिनि. ही जे पंहिंजी अर्थ आहे पीरो जे चवण जे हिसाबे इनके 300 बिलियन ईयर्स थिया आहिनि.
અને ઇન્ડિયા મથે ઘણી વખત સિવિલાઇઝેશન પેદા થઈ મટી વઈ, પાછો એમીબા से ચાલુ થયો, इंसान સુધી પહોંચી, ઇવોલ્વ થઈ, સાયન્સ બહુ વધી, તો એ સાયન્સ જે લીધે પોતે મરી ગયા અને દુનિયા બરબાદ થઈ વઈ, પાછો બે ઠिकाने એમીબા से પાછો ચાલુ થયો। એડી તરે ही अर्थ जे मथे घणी वक्ते इंसान जी हस्ती थई है, मटी वई है, पाछी थई है, बट दिस इज नाउ इज द लास्ट टाइम। मुझे भाई जमा खाने जी रीत रस्म ऊपर सवाल पूछना सवाल है हकरो आए कि जरे पा मानो कलमा बोलता तरे घणा हाथ मथे बियो हाथ रखी नहीं करता અને ઘણા જમીન से हाथ रखी ने त्रे वक्त पासुरन ला इलाहा करूता तो क्यों सच्चो मतलब है ने इनो असल मतलब पूरो है ने बियो घटपाट मथे जने पा बत्ती बावता इंजो मायना पूरो। हाँ बहुत राजी थे, ये सवाल पूछा बहुत राजी थे ने मुझे याद हुआ कोई वक्त है कि याद अचलो तो हम चोंदो से घणा माण्हू जो खड़ा ऊभा हूं अने हथ मथे हथ रखीने अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमो पढ़न तो वकाए, पण वेठे वेठे कारण के हथ त्रे वक्त जमीन मथे रखियो खपे। इन जो मतलब ही है कि आऊं जिदो सिजदो कियो आहियां, ही सिजदे जी जगह से जे धूड़ आए ही धूड़ आऊं गिनी मुझे मुंह ते मलातो, पोते जी हम्बलनेस के कारण आजिजी जे हिसाबे अने रसूलुल्लाह करना हुआ कि जेड़ा सजदो करी कोई जेड़ा सजदो हुओ एडा से मिट्टी कदी धूड़ गिनी अने मुंह मथे मलना हुआ साइन ऑफ ह्यूमैनिटी। अने इतरे वक्त पांचे कलमो बोलियो खपे, माण्हू खे खबर न हुन जे कारणे अमुक माण्हू तो ही करी छॾनि था, मुंह फिराईंदा था, घणा माण्हू ही जे मथे करीने पग मथे गिनी गिननि। बराबर पांखे समझियो खपे कि ही हथ जमीन मथे रखी अने त्रे वक्त असांखे कलमो पढ़ियो खपे अने खुदा ताला जे हुजूर जे अंदर असीं नाचीज़ आहियूं, तुच्छ आहियूं, धूड़ मिट्टी जहिड़ा आहियूं, या मौला तू मालिक बादशाह है आऊं कीन आहियां, ही इंजो मतलब है। जमात खाने जे अंदर जॾहिं असीं गटपाट जो क्रिया शुरू करूं था तो इनजे बाजू में बत्ती रखण जो कारण ही है कि सिंबल ऑफ जोत मौला जे दरबार जे अंदर जमात खाने जे अंदर मौला जे नूर जी जोत है। अने ही जे पानी है जिनके असी नियाज तरीके पीऊं था, ही पानी हजर इमाम जे हथ जो है मौला पोते नियाज बनाई, पानी के पवित्र किया अने ही जोत इनमें विझी है पानी में। इनकी निशानी ने सिंबल जे हिसाबे जमात खाने में गटपाट मटे असी जोत रखूं था। अने मुझी अरज है कि ही जे बत्ती है गटपाट चालू थिए इन पहला ही बत्ती बारी खपे। घणी वक्त माण्हू भूली वेंदा था, पण बत्ती पहला बारी खपे अने पोइ घटपाट थापण जी दुआ ॾियणी खपे। सैटरडे क्लासेस में टीचर साथ ने आर्ग्यूमेंट थियो हो कि ये जे पा लाइट बंद था इनजो कारण ही है कि अॻियां जे वक़्त में इलेक्ट्रिसिटी न हुई, तो जॾहिं गणपति दुआ ने पढ़ानी हुई सामने सफ़ाई करण लाइ ने तो चारे बाजिया जमाखाने जे अंदर दरेक ठिकाणे मीणबत्ती रखण में अची हुई, तो एटले पाण आईने कि अॻियां मीणबत्ती रखना हुआ गणपति सेरेमनी लाइ कि लाइट मिले। तो हाँ सचो मतलब क्यों कि लाइट सिंबलाइजेज नूर ऑफ हाजिर इमाम, कि लाइट सिंबलाइजेज टोटल रोशनी मीन्स ब्राइटनेस। सदर दिन के जमाने में मीणबत्तियों न हुयूं, कारण के जे मीणबत्तियों आहिनि ये ऑयल में से निकरन थियूं कि जे ऑयल जमीन में से अचे तो इनके जे टार वगैरह थिए तो इन पहला
ऑयल निकरी वञे पोइ इन जे अंदर से कि जहिड़ी रीते पेट्रोलियम जेली निकिरे थी अहिड़ी रीते ही इन में से कढनि था ऑयल में से। अलबत्ता कि सदरुद्दीन जे अने इन पहला जे ज़माने में राजा महाराजा कि ये मद जी मीन अचे थी इनमें इनके बारी ने रोशनी करना हुआ पर ये एटली बड़ी कीमती ने मोंगी चीज हुई कि गरीबों जे वटे शक्ति न हुई हेड़ी मीन बती बारन जी। अने पी सदरुद्दीन जे ज़माने जे अंदर जमत खाना समी शांत जो हुंदो अने बत्तियों वगैरह हुयूं घी जा दीवा बाल न हुआ। ई जे घी जा दीवा जमात खाने जे गटपात जे वक्ते 7 दीवा बार न हुआ। इन जे अंदर रोशनी जो कारण एम न आहे पर सिंबोलिज्म आहे इमाम जे नूर जी। मेटीरियल डिराइवेशन ई थई सके कि भई न्याज पीनता ने पाके रोशनी खपे एटले ही बत्ती बार न हुआ। ही रीजन न हो, रीजन तो सिंबोलिज्म हो इमाम जे जोत। वो रीजन बराबर नहीं। रीजन के जे लाइट जे वो रीजन न बराबर नहीं। रीजन सिंबोलिज्म है इमाम जी जोत। पहली गाल बेटा ही है कि इंसान जो शरीर है इंसान जो पोते जो नहीं। योर बॉडी डजंट बिलोंग टू यू, इट बिलोंग्स टू गॉड। एंड हाउ कैन यू जस्ट यूज योर बॉडी in the way you want? Why not in the way God wants? Well, we have to ask God whether He wants it or not. But then we have an intellect. Should we not use it? No, intellect is not sufficient. It is the Imam who will guide you. Only Prophet and Imam can tell you. And so far there is no such farman that you should donate. I derived it from the thing that Rasulullah has forbidden to mutilate body. Because in Islam suicide is also forbidden. Islam it is forbidden to cut any limb, even of your foe or enemy. And when man is dead, the dead body is respected in Islam very much. And that is the thing I derived out of that. But it is Hazrat Imam who will say the final yes or no. This matter has gone to Hazrat Imam and we are waiting for it. I personally believe we shouldn't give any limb to anyone. Well, I mean, what you have said, okay, no, what we don't want to mutilate our enemies, I can understand. But if it is for a good cause, this is where the concept arises anyway, not my unit. So, how can you say it is a good cause? Your any parts, suppose your heart may not be accepted by the other man's body. If it is rejected, then what is the use? It is an attempt.
which is doubtful. There's possibility. Yes, but very less. Hardly 0.1%. This science has not yet developed into the stage where you are definitely giving something to someone. No one has ever lived more than 2 years. And in under great difficulties, no one has ever become absolutely healthy after receiving some limbs and organs. No one. He might be in more difficulty if you give your kidney. He might be in more pain and sorrow. And the path may come on you to a little extent. Who says? Pandey, the Montezet Jamaat mein humko kehta hai कि the son donated kidney to the father. He's still living and both are healthy. Fine. થઈ શકે. કારણ કે father અને son આય હકડો જ blood હોਣ જે કારણે ही possibility આય. ही possibility આય. So हीरा रजा आए donate करण. ના, હું રજા जी કાલ નતો કરા. मुझे फाइनल हुक्म ना हले इनमें. ये तो हजर इमाम जी अंदर यस नो चोय. बाकी आऊं तो इस्लाम जी प्रिंसिपल जे आऊं समझी शक्यो आया. इन हिसाबे चांसो કે ही चीज बराबर नहीं. Let him ask. No, come on. But he related by Islam में रखते थे कि blood donate करूँ था. It's accepted by Islam, isn't it? गालियाँ के blood is regenerated in your body. If you give kidney, can you produce another kidney in you? No, but suppose that we have 2 kidneys, isn't it? Yeah? Okay. If we have 2, you can give one. Like in blood, you have 5 liters of blood. If you give 1 liter, even 4 liters, even 6 liters. A man can donate about 5 gallons in 20 years' time. That doesn't matter because if you regenerate blood again, blood is lost, blood is regenerated, blood is consumed, blood is a different thing. But an organ of the body, like kidney, heart, or liver, this is a difficulty. And there is another thing. When we talk about Ismailism and consider this particular question from Ismaili spectacle, why a man is suffering? Number 1, because he has broken the laws of nature, so he is suffering. He is guilty. So let the law of karma take place. Let him suffer, because by suffering his guna is forgiven, forgotten, pardoned. We do not only see from Ismaili point of view, but we also see from general Islamic point of view. And Islam says every pain and sorrow is because of your own sins. So they must suffer. So let him suffer. Yes, let him that's suffer. coming from God. But at the same time, માટે ઇસ્લામે શું હતો કે મારું ગરીબ હોય, કે દુખી હોય, એને મદદ કરો. Exactly. But આપણે શું ના કે બધા ઈ ગરીબ હોય તો એને મથે કુદા મોકલાય ગરીબ. બે ચીજો હું જે કારણે કરું હોય કે જો હું સફર કરનો हुआ मुझे गुनाह जे कारणे અને તું मुझे મદદ કરે તો તું શો કરે તો kindness towards me, and it is a virtue, it's ibadat. પણ જો ખુદા કે ही મંજૂર हुंदो तो तुझी हेल्प मूंखे कम अचदी. जो खुदा के मंजूर न हुंदो तो तुझी हेल्प जे कारणे ते छतां हूं दुखी तो रहंदो से पण तोखे सवाब मिलंदो. मूंखे जे दुख उपाड़ण जो हुंदो ही दुख उपाड़ण न ज हुंदो तोखे सवाब मिलंदो. એટલે સફરિંગ જો હું ઉપાડા અને તું મુજી મદદ કરે તે છતાં કદાચ મુજી સફરિંગ ન પણ બીતે તો કે સવાબ મિલે. એટલે અસાંखे હુકમ आहे કે અહીં ॿिए जी मदद करो અને મદદ કરણ में फ़ाइदो आहे. પણ लाज़िम नहीं कि मुंहिंजी मदद से के तुंहिंजी मदद से कोई जी सफरिंग मटी वञे. सफरिंग मटे या न मटे ई ॿियो सवाल, पर तव्हांखे मदद कई खपे. અને એ જે चीज आहे न कि कोई शरीर जो ऑर्गन ॾिनो
એ હેવર બહુ જ પ્રિમિટિવ સ્ટેજ તે आहे હેવર સુધી इनमें कोई जाजी सक्सेस मिली नहीं हिकिड़ो केस अहिड़ी थी आहे कि फादर एंड सन जो आहे तो फादर एंड सन जो केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस थी सके इन जे अंदर मूंखे कोई जाजो ऑपोजिशन न आहे आउं तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स जी ॻाल्हि करां थो हिकिड़ो माण्हू आहे बहु सफ़र थिए थो बहु ज सफ़र थिए थो अने ही सुसाइड करे तो सफरिंग में सब अची वञे न पण इस्लाम चए थो कि सुसाइड हराम आहे लेट हिम सफर नॉट टू कमिट सुसाइड इन जी जजमेंट ख़ुदा सिवा कोई न ॾेई सघे So I have a good example now. It's saying that Germany and he saw a picture which that the baby was born with hands attached. Picture na, I saw personally the baby, not the picture. So full of hands were attached. In the hands it हुआ at shoulder. And it was really deformed and I tried to well in the things they put it repair करे पर never thought ये लोग बना रहे थे कि women ये लोग बोलते हैं कि neglect करे था and also that ये लोग का medication किया था it affects the baby. Okay, so how can we say that maybe it was not the mother's negligence that is responsible for the baby? Maybe. Then how this baby was suffering? Like I know, this is so very unfair. It's so important that the parents be responsible, take care as to how and think of the just now you say that the mother might not be responsible for it. So you just stated that mother might not be responsible. No, this is what I'm trying to question you. You're saying that the mother may not be responsible, perhaps it's the child's karma. No, I didn't say mother was not responsible. Mother was responsible to some extent on her part, and child was responsible on his past karma, on his part. Both were responsible at their own level. God killed with one stone so many birds. You follow what I mean? There is a saying in English, kill two birds with one stone. So God may kill so many birds with one stone. Reincarnation does not exist, it does exist. How nice you say, Keepan. तू चई तो कि तू नहीं आयो ने सुनी सुनाई गाल किधर से निकली आई हूं ना कि रिइंकार्नेशन की गाल नहीं हुई तू बेबी चाहिए होती जे तू सिटिंग करो वैंकूवर में करो वैंकूवर में वो सेमिनार अटेंड करो was on reincarnation and yet it is assumed that what you're trying to say reincarnation is here and when you come here you are here for a purpose. That baby that you saw with the small mango is paying for it. It is his punishment, and that the parents have to suffer. I believe that the same thing. You are right. But this refers to that philosophy is true that reincarnation does exist. It does. We are all here as punishment or as to fulfill something or as to pay back something that we owe to somebody. I believe so. Mr. સાહેબ reincarnation ની વાત આવી જનરલી ખાસ કરીને સુન્ની મુસ્લિમ સાથે વાત કરતા તો લોકો જોતા કે ઇસ્લામ में reincarnation જેવી કોઈ ચીજ આવી જ ના તો मुसलमान generally generally मुसलमान बिलीव नथा करें पण हिकिड़ी बुक डॉक्टर मिर्जा बेग बरेली में से कि 40-45 वर्ष पहला इंग्लिश में हिकिड़ी बुक लिखई रीइनकारनेशन इन इस्लाम अने ही 27 वर्सेस ऑफ कुरान जी रेफरेंस ॾिनी आहे ऐं पोते जॾहिं ही रेफरेंसिस नारियो से तो मूंखे पंहिंजी चीज जी ख़बर पई कि कुरान शरीफ़ जे अंदर
हेड़ी मेंशन आए कि इंसान पास्ट लाइफ में जीरो हुओ, हेड़ी जी रीते इनके फ्यूचर में पण लाइफ मिलदी until he progresses, makes progress, develops himself to perfection and unites with the ultimate nur of Allah. એટલે ही चीज आए, पास्ट लाइफ पण आए અને फ्यूचर लाइफ पण आए, कुरान शरीफ में आए. मुसलमान जनरली बिलीव नथा करे અને जनरली मुसलमान इमामत के पण बिलीव नथा करे. तो कुरान जी इंटरप्रिटेशन मथे आए. मुस्लिम्स दे डोंट बिलीव, वी बिलीव. साइंस रिस्पॉन्सिबल आहे, पण जो साइंस जे मथे अमल करण वारा के साइंस में से फायदो गिनन वारा, बेनिफिट गिनन वारा, जो मजहब के साथे रखन, तो मजहब जी ताकत जे लीधे साइंस जी जे बैड साइड आए, डिस्ट्रक्टिव साइड आए, ये बची वञे. फॉर इंस्टेंस रेगन અને હેવર કેરા મૂકે નામ યાદ ના હે, પણ ચરિયન તો ગુજરી ગયો. ही ब सुपर पावर्स जे प्रेसिडेंट्स आहिनि, सॼी दुनिया जी जे फेट आहे, ही ब माण्हूअ जे कब्जे में आहे. ही ब में से कोई जो मगज जो खराब થઈ વને અને હોટ લાઈન કે ઇમિડિયેટલી જો ટચ કરી દે એટલે પતી ગયો. એ જાય ને વર્ક સિચ્યુએશન. પણ જો બે સાઈડ में धार्मिक विचार वाला हूं, सारा नेक हूं, इबादत वाला हूं, तो दुनिया जी डिस्ट्रक्शन न थिए. साइंस दुनिया जी डिस्ट्रक्शन नहीं करे. नास्तिकवाद, नो बिलीफ ऑफ गॉड जी है, इनके असी इंग्लिश में चवंदा एथिइज्म, डिसबिलीफ, अधर्म, कुफरपणो, ही चीज दुनिया के नाश कर दे. नॉट साइंस. पण जे मारू अधर्मी हुंदो अने नास्तिक हुंदो, काफर हुंदो, ही साइंस के यूज कर दो फॉर डिस्ट्रक्शन. એટલે हिकिड़ी तरफ़ मजहब आहे, धर्म आहे, ॿई तरफ़ अधर्म आहे. बिलीफ एंड डिसबिलीफ, ईमान अने कुफ्र, ये बजी लड़ाई है. અને જે સાયન્સ કે વધારે યુઝ કેર કર દો, કુફર કર દો. એટલે કુફર જે લીધે સાયન્સ जी શક્તિઓ યુઝ કરી દુનિયા કે ડિસ્ટ્રક્શન में ફેરી દીધો. હા બોલ. Okay. Give him the mic. It's written in the Quran that every 40 miles, I think, there will be one light, and that's where the soul will live. Some great disaster will happen. Is that nuclear war or anything like that, or is it the Earth colliding with the sun or something? And what does it symbolize? Every 40 miles the soul will survive, and that brings in the question that creation is eternal. So how can the world come to an end? Who told you about this, Gina? We always have discussions. He wants a good explanation of it. ના પણ ઈ 4 માઇલ જી ગાળ કિના से खणी आयो? 4 માઇલ ના ઈ एक्सप्रेशन भी जण मंगे तो કે અમુક ગાંવ કે તે જ્ઞાન में प्रेडिक्शन आए, so he wants to correct એરી પ્રેડિક્શન આए. એ સમસ્યા था કે 12 કોસે દીવો બરે. 12 कोस इज 24 माइल्स. 2 माइल जो हिकिड़ो कोस हुए,
एटले 24 माइल जी रेडियस में हकड़ी बत्ती बरदी। ही बत्ती जो मतलब है अंदर जी नूरानी बत्ती। एटले 24 माइल जी रेडियस में हकड़ो माण्हू हूंदो के जे इबादत वारो हूंदो अने इन जे दिल में खुदा जो नूर हूंदो। ही इन जो मतलब है। दुनिया जे अंदर नास्तिकवाद ने कुफ्र एटलो बधो वधी वेंदो, वस्ती बेहिसाब हूंदी। एवं तो नारो हेॾा जे मॉन्ट्रियल में रात जो नारियो से मूंखे लगे तो बिलियन 2 बिलियन बत्तियों हूंदियूं। दरेक 100 मीटर मथे हिकिड़ी बत्ती बरे थी। अन ही बत्ती जेतिरी जी ॻाल्हि करनि था गिनानो में, ही इंसान जे दिल जे अंदर खुदा जी मोहब्बत में जोत जी जे बत्ती आहे। ही 24 माइल जे रेडियस में हिकिड़ो माण्हू हूंदो। दुनिया घणी वक्त डिस्ट्रॉय थी है अने ही डिस्ट्रॉय थी है नॉट द अर्थ itself but the things in this earth destroyed many times. So there won't be third world war. Third world war तो थी नहीं, चौकस थी नहीं, and very near within this century. बंद की खूब करो। And Canada will not be involved, inshallah. नरो ही जे दुनिया है पांजी अर्थ इन मथे घणी वक्त डिस्ट्रक्शंस आवी आइन। आई कोई वक्त नेक्स्ट टाइम डी जी फ्लाइट गिनो गोइंग टू यूरोप अने मथे से नीचे नरो एटलांटिक जे अंदर बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका असी मथे से नारी शकूं था कि आज से हजारों वर्ष पहला हिकिड़ो नंढो कॉन्टिनेंट हुओ, इन जो नाम हुओ एटलांटिस। ही एटलांटिस कॉन्टिनेंट हुओ। ही जमीन सजी जमीन ही अर्थ ही भाग पानी जे अंदर मर्ज थी वियो है। मथे से नजर पन अचे तो हजारों वर्ष पहला एटलांटिस मथे सिविलाइजेशन बड़ी पावरफुल हुई। ये लोग मटी गया। मैक्सिको विनो जड़ी रीते इजिप्ट जे अंदर पिरामिड्स आइन जो कि पिरामिड्स कोन जा आइन अने हिडा थोड़ो फर्क है पर हिडा पण पिरामिड्स आइन मैक्सिको में। ये हजारों वर्ष पहला जी सिविलाइजेशन के डिपिक्ट करन था कि दुनिया जे अंदर घणी वक्त सिविलाइजेशन थई है अने पोइ बर्बाद थई गई। तो हेवर पानी थीन वारो है। यस दुनिया जा जीरा धर्म आई जीरा बोर्ड ओछी हमारा ओछी ये बात दुनिया जा जीरा धर्म नहीं there is more board there. And I think if you look at the situation globally, there is more conflict based on religion. For example, England में Catholic, basically Arab में Jews, Iran में Iraq, Sunni में Shia, India में ना तो constantly कमाल है, पंजाब, Pakistan में ना तो Muslim, India and Pakistan में कमाल है totally. Whereas if you look at the communist world, there is less coming out in that sense. Can you explain on that? Your study is not correct. ये मड़े जो वॉर्स थई रहियूं आहिनि जे तूं जस्ट हेवर थी आहे इन जे पुठियां हेतु मज़हब न आहे, इन जे पुठियां पॉलिटिक्स आहे। बेलफास्ट जे अंदर अॼु 15 वर्ष से जे कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टेंट्स लड़ी रहिया आहिनि, ही लोको not for the sake of Catholicism and Protestantism, it is for the sake of land. IRA वारा इनके ब्रिटिश के चवन था कि आई हिजा से निकरी विनो। ही वॉर जे आहे जेतरी तू नाम गिणे आहे ये रिलीजियस वॉर्स न आहिनि। देयर इज अ पॉलिटिक्स बिहाइंड अने क्योंकि ही साइड में नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज जे अंदर फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड मूवमेंट्स होने जे कारण अहिड़ा कॉन्फ्लिक्ट तरत बाहर अची वञनि था। जॾहिं कम्युनिस्ट कंट्रीज जे अंदर पुॾा तो जबरदस्ती से परसेक्यूशन आहे माण्हूअ जी, माण्हू उभा ज नथा थी सकनि, कोई बोली नथी सघो। हैव यू गॉन टू मॉस्को? गो समटाइम। आई हैव गॉन टू रशिया। हिकिड़ो माण्हू खिले नथो, मड़े जा मुंहुं उदास पे आई, कोई खिले नथो। कम्युनिस्ट कंट्रीज जे अंदर माण्हू जे रहनि था जानवर जहिड़ा रहनि था। इनके
બોલણ જ રજા ન કોઈ પણ ટુરિસ્ટ બહાર से હલ્યો બી ને અને ही टूरिस्ट रस्ते जे अंदर कोई माण्हू खे उभो रखीने जो गाल करे वो माण्हू गाल करने तैयार ने भगी ने એટલા એ લોકો बिहामनी हालत जे अंदर कम्युनिस्ट कंट्रीज में रहन था અને ही कंट्रीज में जे तू इंडिया जी અને पाकिस्तान जी અને इराक ने ईरान जी ही जे लड़ाइयों जी गाल करे तो ही कोई रिलीजियस वॉर्स नहीं देयर इज पॉलिटिक्स बिहाइंड बट बाय चांस they are talking about religion. Religion never tells you to fight and destroy others. અને આકડો માડું હોય આમ તો કે દાખલો દિયા તું एजुकेटेड बॉय आई है माविया ने अली लड़दा हुआ एडा अली जो लश्कर हुआ एडा माविया जो लश्कर हुआ अने अली जो लश्कर मारी 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 माविया जे लश्कर के फना क्यों अने माविया नारे के हणे मौत नजीक अचे थी उमरवास के चई भाई की रस्तो कर ने तो असी तो हेवर मरी विया आहियूं तो करो कई रिलीजन के यूज कई कुरान जी चौपड़ियों गिनी पोते जे नेजे मथे लटकाई अने पना मांगे मौला अली के खबर हुई कि ही रिलीजन न है पण अंदर पॉलिटिक्स है मौला चयो कि भाई ही मूंगो कुरान है हूँ बोलतो कुरान है लड़ो पण मौला जो लश्कर जे अंदर माविया जा माड़ू हुआ એટલે ही वॉर बंद थई वई क्यों जो मतलब करो है कि रिलीजन कोई लड़ाई चालू नहीं कई पण माड़ू रिलीजन के पॉलिटिक्स जे कारण यूज किया and in all these wars that you have just referred there is politics behind not religion. बोल बाबा within this century जी न्यूक्लियर holocaust जी काम नहीं करे ही चो सके थर्ड वर्ल्ड वॉर थी नहीं I didn't say nuclear war. Is there a chance if Islam will survive? Yeah, religion will survive. Next century is Islamic century, Hazrat Imam has said. Islam will come up as a great power. Will it conquer as it is before? Yes, but not in my and your life. It will conquer. The whole world will become Muslim, but the population of world at that time will hardly 300 or 400 millions. But it's in the Bible where it's written that at a certain time where all shall be as one is God, will be an angel, and then again the devil will emerge. Will that occur? But it says in the Bible, and yet it says in the Quran. Now, which is correct? You said that all religions are preaching the same message of Islam. True. True. But then the Christianity that you find in the Bible is not the real Christianity. It is the Paulian system. Paul has brought this present Christianity, not Jesus. And they have polluted and altered the gospel of God. We believe in Quran. We also believe in Bible, but the part of the Bible which tallies with the Quran, and there are so many things which tally with the Quran. There will be a good period, 125,000 years of tranquility and happiness. There won't be any crime, there won't be any lawlessness, there won't be any sin during that period of 125,000 years, and that will be the best period of humanity on earth. It will be, I think, in 22nd century, maybe in 23rd century, but good time will come, and that will be Islamic time. Whole world will become Muslim. I will give you a little, just a little glimpse what I have gathered from Quran, Hadith and Ginans. There will be a series of war for the next 100 years. A third war, after that fourth war, may be smaller than the fifth war, but there will be a series of wars for the next 100 years. Population will increase much.
science will increase powerful. Man will become, in population and number, very much higher. Man will be very intellectual. But with the material progress and development, there will be less and less spirituality, less and less ethics and good things. Man will suffer more and more. Food will dwindle. There will be many comforts, but man will be unhappy. After 100 years, approximately, there will be a great war. Now before that war, there will be a war between Christianity and Judaism one side, Islam and communism on the other side. Communism and Islam will become friends. I shouldn't say Islam, I should say Muslims, not religion but the community. Muslims and communists, they will become friends and they will fight with the rest of the world, that is Christians and the Jews. Jews and Christians will be wiped out, inshallah. Then there will be a war between Muslims and communists, and then communists will be wiped out, inshallah. Muslims will remain, though in a very small number. 80% of the world will be destroyed, and there will be a restart of happy period which will last 125,000 years, but at that time there won't be any aeroplane, there won't be any motor car, there won't be electricity. All the modern facilities and comforts will be destroyed. Humanity will start afresh. No one will trouble no one. All will be happy, scattered. Are you worried? We had Alwaaz, an elderly woman who came and had a seminar that you're having today, just a British student. And she said that life today is of a dream of some great creator. When the creator arises, life will end. And yet is this possible? Is this philosophy of hers true? And is it proven? Or is it a mere... No, she said right. I'm telling the same thing. No, you're talking about material world. She said that as we exist today, you've got a dream in somebody's mind. When it arises, when he wakes up, the dream will end. She meant, I think probably, that man's life is like a dream. And when man will die, he will realize that his life was a dream, and now he has awakened from that dream. I think she meant that, which you might have not taken in the sense. That is true. It is according to Quran, that life is but a dream. Yeah. The prediction that you made, can you give us an example of the source? I said Quran, Hadith and Ginans have given me this. I cannot give you the particular page or particular book. Study these things which I have studied. There are Ginans which contain about Daint Kalinga. If you read Ginans, there are many hundreds of Ginans of this kind. And you will find even the date of that time when the start of a happy period
according to our Ginans, it will be Satyug or Ratan Yug. The date, the day, the time, the place, the year, and the name of the Imam of that time are given in Ginans. Can I just make an announcement? Panje schedule प्रमाणे बाकी हकरे वगे पता ही नहीं है. So can we have short questions and fast? No, 15 मिनट 14 मिनट बाकी हैं. हाँ बोल. तो के गमे तो ना तो बीए के छड़ी दे. So this is, you alluded to like, okay, that's the responsibility of manufacturing a bioasset. Has manca for manufacturing and it's good, the middle okay, time for manufacturing okay, courage supply, okay, children's job bringing in bioasset. Why you donate not to like, but the thing is, okay, higher, you say women are ambitious too in terms of just improving themselves, not in terms of conquering worlds or anything of that nature. Maybe it's not really. But I'm trying to get how women try to improve in life. So how is there a conflict in fulfilling her ambitions in that respect as well as maintaining her roles? And what are the specific roles that Islam has an indication? Well, if you talk about Islam, then certainly there are many things which you won't like. As you said that others will not like. I say here you won't like personally. Islam, if we read Quran, we come to know that God has created men and women in different forms for different purpose. Women are ambitious, of course, they should be. I'm 100% no, but 101% with them. But there must be religion between men and women. What I meant that our society presently in Canada, Ismaili society, is deteriorating in the sense that our family life is deteriorating. Love and affection, comfort and pleasure, and amicability is wiping out. For 2-3 months, if the husband is out of work and the wife is working, then she thinks that she is the master of the house. Just because she is earning money, that was my speech, my aim. Because this thing has happened in Canada, so the wife is thinking in that term, because Canadians, they think in that term. But if we live in eastern side, not one but I have got many instances right now in my memory that husband became invalid and the wife worked and maintained the family for nearly 32 years. She never uttered a word against her husband that you have become a burden on me. But if that is the case here in Canada, the wife would divorce him, send him to the invalid house and be on her own way. This is the difference between eastern side and the Canadian side. Hazar Imam tells us that you may live wherever you like, but do not forget the traditions of your forefathers and your ancestors. Your eastern traditions must be kept, and that is the thing that we should sacrifice for the sake of our family members. We should love for them. If one is suffering, I'm also suffering with my wife or with my child or with my father. We must all share suffering and happiness. But here, people are becoming more selfish. And I've got so many instances here, particularly in Toronto and other sites,
just for a little, very small matter. What the small matter? The husband could not find any job for 1 year and she divorced him. So that is the thing I was telling. According to Islam, head of the family is the husband. He is the head of the family. But here in Canada, it is not the matter. A child may be named after father, or now it may be named after mother. In Islam, it is against. It is thought as an illegitimate child if he is named after a mother. It is not allowed in Islam to name the child after a mother's name. Isn't that a discrimination? There is a discrimination. So is God a discriminator? Yes, if between Kafir and Mu'min, God discriminates. Something bothers me. Otherwise, the lectures, they all concentrate on the women not being proper. Why is there not an equal time or given to men not fulfilling their responsibilities? Like statistics show I agree with you. Out of in 6 minutes, either one child or one woman is being beaten up by a man. We don't hear about it. In our Jamaat, this thing happens. We don't hear about it. But when one woman perhaps leaves her husband because he's not working, that is publicized. It's not fair. I mean, because women are trying to fulfill their role, but then it has to be counterbalanced. And if it is not balanced, there's no harmony. So it will be, To some extent, I agree with you. But the other extent, I don't agree. I tell you, men and women can never be equal. You agree? So we'll full stop here. I agree in that respect, but what I'm saying is that a lot of concentration is given on women's responsibilities and not enough focus on men. I mean, but क्या है मुझे कोई इंसिडेंट है नहीं कि दस 15 से जो है वो मार्स के ही करन जो आऊं घनी वक्त चाहतो कि अगर जो men and women गिंजे आऊं घनी वक्त चाहतो in my voice मर्द लोग को વધુ बदमाशाई women करता मर्दों में वंग ओछा नहीं बहुत जी चाहिए पर स्त्री से आए ना न बाइयों जा दिल खुदा नरम बनाए बाइयों में रहम दया ही चीजों વધુ आई मर्द में ओछी आई पर जो मर्द हकड़ी साइड में छड़ी दे અને જો બાઈઓ જે અંદર જુલમ અચીવીને અને જો બાઈઓ જે અંદર સખ્તી ને હાર્શનેસ અચીવીને તો જે ફેમિનિટી હોય ને એટલે સ્ત્રી પણ હોય મધર પણ હોય ઇનકે લાછન લગે તો મધર દુઃખ ઉપાડે અને કોઈ બી બચ્ચે મથે જુલમ ન કરે ન થીન દે પણ આવું ના રહ્યો અહીંયા આકડી છોકરી 3 વર્ષની आकड़ो छोकरो 4.5 वर्ष जो इतने मासूम बच्चे के छड़ी हकड़ी छोकरी 28-29 वर्ष जी हस्बैंड के छड़ी बे साथे भगी वही मर्द करे इनमें एटलो दोष नहीं कारण के मर्द जालिम आए जबरो आए बदमाश आए 90% मर्द खराब आए 90% पण भाइयों जे अंदर नरमास प्रेम दुख उपादन जी शक्ति जी आहे जॾहिं बाइयों जी अंदर हिकिड़ी मां वाइफ हुए तो वंदो ना पर हिडा मां जी ॻाल्हि करा थो कि मां बो मासूम बच्चे के सेक्स जे कारण सेक्सुअल हैप्पीनेस जे कारण मर्द के छॾीने हली वई जुल्म અને એવા ઘણા ઇન્સ્ટન્સીસ થયા આहिनि બેટા અને થઈ રહ્યા આहिनि पंहिंजी कौम में हेॾा कैनेडा जे अंदर ऐं जमात जो नाम न थो ॾियां ऐं माण्हूअ खे ओळखां थो जमात खे ओळखां थो ऐं जनरल ॻाल्हि करां थो कि पंहिंजी बाइयों जे अंदर जे बाईपणो आहे स्त्रीपणो आहे जे माउपणो आहे फेमिनिटी आहे એ ઓછી થઈ રહી आहे કારણ કે हिन जी सोसाइटी ख़राब आहे जो धर्म जे अंदर रहियो
जो मजहब जे अंदर रहो, बंदगी करो, इबादत करो, रोज खाने अचो, फरमान सुनो अने पोते जी लाइफ के इस्माइली धर्म प्रमाणे हलायो तो हिडन जी सोसाइटी जो पांके लागो लगे ना। हाँ रियली तो पकड़े ऐसा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। You know, when he says something like this, we don't justify man's behavior. He can't handle it after all, they're right. True. It doesn't make sense. It so does it mean that a woman has to constantly keep on justifying a man's action, no matter how it may be affecting her life, her children's life, her family life? અને તું હર લાઈફ જે જડે તું કરી હતી ને તો જે બેકગ્રાઉન્ડ જે અંદર સેલ્ફિશપણું જીજુ અચી વિયો બાઈએ જે ખાતર અને એ જ વસ્તુ આજ બાઈઓ के અને સોસાયટી के हैरान કરી રહી आहे। मुंहिंजो कुरो, असांजो कुरो, बाइयों जो कुरो, ही सेल्फिश वृत्ति फैमिली लाइफ जी हैप्पीनेस के रिड्यूस करी छड़ी आहे अने स्त्री जे अंदर ई चीज न होनी खपे। She has to sacrifice more. Okay, but I don't know about sacrificing this, but I know that boy, Mars and Buzz, uncle, you know, they're equal in that one eye is the other. Okay, and No, he one eye other जी गाल है ना ब वाइफ जे माथे आई। no. मर्द ने औरत बे जो हक सरखो, स्त्री पुरुष बे जो हक सरखो है पण बे इक्वल नहीं। Equal is not. इन जो कम देव है स्त्री जो पुरुष जो कम देव है पण जो स्त्री पुरुष जे ठिकाने अची अने पुरुष जेड़ी थीन जी ट्राई करे ही चीज सारी ना। I agree with you, Pedro, but the role today, but in the status, they're equal. Okay, but unjo come today, but that does not make one inferior to the other. ना आऊं इंफीरियर जी गाल नथो करा, But I'm saying इंफीरियर जी गाल नथो करा पण जो कुरान विच में खणी अचा तो तू जरा नाराज थी नहीं है। कुरान जी अंदर ही लिखल है कि हकड़े मर्द जी जिदा विटनेस हुए तो वुमेन इज इक्वल हाफ એટલે બહુ ભાઈઓ ખપન હકડી વિટનેસ કરન માટે મરદ હકડો જ સફિશિયન્ટ आहे। જો કુરાન जा खणी अचूं तो अज ही गाल थी હતી પણ ગાल करो है असी इस्माइली मजहब जे अंदर भाइयों जो स्टेटस बहु વધારે आयो दरेक इस्लाम अने बे ठिकाणे पण इस्माइली मजहब में भाइयों जो स्टेटस बहु वडो है। पंहिंजे मजहब जे अंदर इवन ए पीर थई वई हिकिड़ी बाई हसन अली शाह मां बाप जी मां वटि पीरी जोमो हुओ। अलबत्ता बाई इमाम न थई सके के इमाम बाई न थई सके पण पीर जे दर्जे सुधी पंहिंजी जमात जे अंदर बाई पहुंची है। दुनिया जे अंदर कोई पण जगह अहिड़ो दर्जो न आहे सिवा के क्रिश्चियन लोग मरियम के अहिड़ो दर्जो ॾेई दी पण पंहिंजी नात जमात जे अंदर अहिड़ी घणी जगह आहिनि के जितां मुखी कोई न पण मुखियानी आहे। ते भाइयों जो स्टेटस असीं रखी आहियूं पर मुंहिंजो मतिलब चवण जो के ॿिए मिशनरी जो जमात में चवण जो ई आहे के भाइयों जे अंदर जे सेक्रीफाइस जी ॻाल्हि हुई के भई धर्म जी खातिर बच्चे जी खातिर ई लोग भोग ॾीन दुख उपाड़ी छॾनि ही चीज निकिरी ने सेल्फिशपणो अची वियो अने ई ॻाल्हि बराबर न आहे। okay, मुझे पास clarify करना है कि actually I want to say that, you know, it's affecting her life, it's affecting her children's life. What I was referring to is, for instance, भाई जो भी affect ये लोग का जो ये लोग का धर्म को understand करना, ये लोग का knowledge pursue करनी, बिला शक। so, you know, पूरा ही ना। बराबर So if like this is what I was trying to say, if it is affecting her life, her goals, and when I'm referring to women's ambitions, I'm referring to the intellectual kind of ambitions. हाणे तू क्लेरिफाई कई आई उन वक्त कई होत तो ये मड़े चीज चवण जी जंग ना भाइयों के बराबर इल्म सिखियो खपे, साइंस में अॻियां वधियो खपे, गुड प्रोफेशन्स में वञो, इल्म सिखो, बंदगी करो, अॻियां वधियो, नथिंग रॉन्ग, अवर रिलीजन अलाउज इट। But I was talking about family life. तू कॉलेज में वञे अने तुझे बच्चे जी फ्यूचर खराब थी न हुए तो आम तो के चवंदुसि बेटा कॉलेज छॾी दे। जो तू हेवर जे टॉक करी रही है इनमें ही थिए तो के बच्चे के छॾी ॾियो पण कॉलेज में वञो। एग्जैक्टली ये ॻाल्हि बराबर
પણ આમાંથી બરાબર માહિતી મુજબ ઇસ્માઇલી literature નહીં માનો કે સીધા understanding મળી શકે કે I'm on the way. I'm trying to find a way which will say how we can integrate our modern society and still be Ismaili. ગુજરાતી શીખ અને સુલતાન મોહમ્મદ શાહજા ફરમાન વાંચ કલામે ઇમામે મુબીન 750 પેજીસ આઈન હું તો કે બેટા ત્યાં મળે કે ત્યાં તો ઘણી વખતે વાજ મેં થયો અહીંયા કે ઇસ્માઇલી મઝહબ જો એન્સાઇક્લોપીડિયા એ બહુ ચોપડીઓ आई 2 वॉल्यूम्स इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जे फरमान आई कलामे इमामे मुबीन वेरी इम्पोर्टेंट चोरी न करे पण कोई पण कीमते मिले तो गिन Okay, can we have the last 2 questions now? Okay, so let me finish this. But again, I will reiterate this one request. Can have us in the Panjabodi I concentrate women matter, but at the same time, I share example ke Panjipuran ke one man to witness so equal to 2 women's witness. Okay, but I believe my understanding would be if a man is what he is supposed to be. No one else yet has said what a man is supposed to be. I didn't follow the man said that this is your role, this is what you're supposed to be. तो मुझे वाइज सुने इन जी अंदर तू सुन रही है हम हमेश कुरान हदीस ने गिनान ने पर्टिकुलरली गिनान मथे हम जीचो बोला तो सारा थियो कोई जो हक न खायो जुल्म न करो टॉलरेंट थियो काइंड थियो हमेश मुझे थीम इज रही कि पंहिंजो कैरेक्टर सारो हुअणो खपे एंड वी मस्ट even if it is possible that we must suffer for the sake of others' good, this suffering is also a virtue. We have a question right at the back. I think we need a lot of reading to do, a lot of maturity. And emphasize these things in your mind, and I think it reflects very clearly in a great meaning. But I'll just give one or two examples. Maybe you can educate us in that respect as well. So my various I've seen, there's a demand on the creation that they have put their religion, some put understanding, some put man, some put Maja. There's hardly one, and I'm the only one who put Islam as a religion. And I wonder why. Is Islamism a separate doctrine altogether from all other religions in the world? And this was highlighted even recently that when I was reading an article in Dawn of Karachi, there was on the Canadian aid and whatnot, and they said 3 major schools of thought in Islam, Shia, Sunni, and Islam. And I wonder where does Islam come from? I always thought this was part of Shia. So, these are things which I think are very predominant in our minds, that we look at ourselves as Islamic first. Although I think that we are called Muslims and first followers of Islam. If I call Fatima as the greatest representative of Islam, so why don't we look at ourselves as that? And I think we really need complete rehaul or renovation of our religious and religious education society. It is absolutely true, and you are correct in saying we should always say that we are Muslims. But wherever any such criteria or situation arise that we have to give our identity, then of course we can say that we are Ismaili Muslims. But definitely we are Muslims first, because if we are not Muslims, then we are not Ismailis. We must do that. But unfortunately, present situation in Western society about Islam is very doubtful and critical. In Western media and in Western society, Islam has been looked upon as a militant force. Therefore, we want to tell people we are Muslims, but not like these Muslims.
who are fighting for the sake of material gains. Say the Islam in Western media of Iran, or Islam of Iraq, or Islam of Saudi Arabia. Very multi-millionaire Arab sheikh. He went to Las Vegas 4 years ago, and at that time I was there too. Next day in the paper it appeared that he lost $1.5 million in one night in gambling. An Arab sheikh so and so his name was also there. He lost $1.5 million in one night. Now we don't want to just stand Muslims of this kind in the eyes of public, and that is why we say that we Ismailis are Muslims, but different Muslims than these people. Or say, once I was in Chicago in '82. In Chicago there was a report, a coverage on television. A 22 years or 24 years old young man from Iran. He was being interviewed. So there was a question, what is Islam? He brought his eyeballs out, kept his fist. Islam means revenge. Now is that Islam? Islam means revenge. These Western people, they laugh at us. And Western media is not Islam's friend. Western media is enemy of Islam. But they are depicting Islam in such a way. Therefore, we want to just be away from such a situation. But we are certainly Muslims. And we must always say, we are Muslims but Ismaili Muslims. Last question. Very good, शाबाश. मुझे लगे तो कि तुम्हें जन्म आई है ना. गई काले अपनी छोकरी तस्वीर कढण આવી અને ઈ જો લિબાસ નારી ડ્રેસ નારી મુકે સારો ન લગો. એ લગ્નો કે જેને પિકનિક પહેરી નથી, ટ્રાઉઝર પહેરી અને એ જો બ્લાઉઝ ટ્રાઉઝર જે અંદર અને હેડી રીતે બિલકુલ ઠીક ના. જે લોકો વારા ઢીંતા એની કે ही समझो खपे के ज्ञान घटपाट फरमान तस्वीर दुआ वगैरह में जिन जो ड्रेस सारो ना इनके वारो ना ढीनो खपे. અને जमात खाने जे अंदर सर्टनली पाण खे वेल ड्रेस जो मुंहिंजो मतिलब कि जे ड्रेस इज्जत वारो हुए. अगरि ठिकाणे आउं वियोसि, नांदी थींदी हुई. नांदी नारा तो मुंहिंजी नज़र पई. हू जमात जी कामड़ियानी अहिड़ो लिबास पहिरीने ड्रेस पहिरीने वेठी हुई कि मूंखे पसीनो अची वियो. इन जो गळो जो हो एटलो वॾो वधो अने हेॾा खाली स्ट्रिप जहिड़ी रीते नाइटी जो हुए तो आउं ही चा के नाइटी पहिरीने આવી हुई. आउं પહેલા તો ચૂપ રહ્યોસે. मूंखे रवानो ना आउं बायूं जे अंदर वञी ऐं जो कमड़ियनी मां ही जे लिबास आहे ही बेडरूम जो लिबास आहे अने तूं हिन कमड़ियानी जे तख़त मथे वेहीने अहिड़ी रीते बायूं सुम्हंदियूं हुयूं. इनके पसीनो अची वियो, मुंहुं नीचे थी वियो. एकलो चईने आउं हलियो आयोसि. पोइ ही लोको इन जे हस्बैंड जे साथे मुंहिंजे घरे आया. दारुसलाम जी ॻाल्हि आहे. अने माफ़ी मंगियो. अच्छा अहिड़ी रीते न हुअणो खपे. जमात खाने जे अंदर सारो बिहेवियर रखियो खपे. घणी वक़्तु मर्द लोग अची वञनि था. पाण खे अहिड़ो लिबास हुअणो खपे कि जिन जे अंदर पंहिंजी मर्यादा रहे, शर्म रहे. अने आउं ख़ासि पर्टिकुलरली डिपिक्ट करे नथो वञां, पर मौलाना हाज़िर इमाम जो फरमान पर्सनल फरमान उभो रहीने मौला कराची जे जमात खाने में हिन संबंधी फरमाने कया आहिनि. अने मौलाना हाज़िर इमाम हिकिड़ो तालीको पण हलाया ड्रेस जी संबंधी के इस्लामिक वे प्रमाणे, इस्लामिक भावना प्रमाणे आबरूदार कपड़ा पहरो. अहिड़ा कपड़ा न पहरो कि जिनसे शर्म हया मटी वञे.
अने रसूलुल्लाह फरमायूं कि अगर बायूं जा खराब लिबास हूं अने मर्द जी नजर बद थिए तो ई मर्द जो गुनो नहीं चवाय पण औरत जो गुनो चवांदो। पर्टिकुलरली जमात खाने जे अंदर जे दुआ घटपाट थार सुपरो के ड्यूटी मथे के तस्वीर मथे हूं इन जा कपड़ा काला पन्ना होना खपन, कारण कि काला कपड़ा पांजे मजहब के अंदर मनाई है, बिल्कुल मनाई है। काला कपड़ा ना होना खपन अने मर्यादा वाला कपड़ा होना खपन। ट्राउजर पहरीने अचनो जमात खाने के अंदर भाईओ जे माटे आ मनाई नथो करा, पण सामे ब्लाउज एटलो लंबो हुए के फ्रंट पोर्शन ढकाई विने एवढो लंबो होनो खपे, एडी रीते ना होनो खपे। तू करो तू तो करेगा तू तो करेगा। हाँ बोल चलो क्वेश्चन बोल बोल। I muke gaykaale પણ disagreement દેવી I muke તો સુતર ફરમાન કહેવા કે આને વેસ્ટર્ન ક્લોથ પહેરો everything but પાંચ એસોસિએશન યા વડા हाँ एटा क्यों सरदार बेटा एसोसिएशन અને કાઉન્સિલ बे के नाम दईने आ हेवर क्यों से कि ही क्वेश्चंस मुके न खपे तू ही जई सके पांजा वडीलो I muke કહેવા કે તે કપડા આમ ગayકાલે પહેરો સારા ના तू हेवर पेरी आई I finished? Hello? आजी हवा मिली का तो बंद करो सारी। I think we're now reaching the end of our this morning's program. However, before we conclude, I would like to propose a word of thanks for Alwaaz, Alija, Abu Ali, Ali Bhai, who very kindly gave us his time and energy to come and provide this morning's very illuminating discussion. To Mr. Mehboob Kamaria, who has been driving Alwaaz around. To Captain Ma, who came early this morning and prepared the wonderful tea for us. To Mukhi Sahib, Kamre Sahib and President Sahib, who made this function possible. And finally, last but not the least, to Missionary Ma, who has been accompanying the Alwaaz on this arduous trip. Thank you. अल्लाह मेरे आई थोड़े दिन से मुझे वाइजों ने लेक्चर सुनिया जो शुक्रगुजार आया सुखी आबाद रहो बोला दीन में दुनिया में आज चढ़ती करे जो ईमान मजबूत करे आज मथे राजी थी नेक उम्मीदों पूरी करे मौला दसुन सुकरेत में पूरा रखे फरमान बरदार बनाए